Hey guys, welcome back to my channel and I am back with color part tutorial of होली स्पेशल ड्राइंग। इस ड्राइंग का आउटलाइन ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा जल्दी जाके पहले वो वाला पार्ट चेक कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर दूंगी। नाउ कम टू दिस पार्ट। कलर करने के लिए डॉम्स का 25 वाला शेड बॉक्स से कुछ कलर्स मैं सिलेक्ट करके रखी हूँ। शेड नेम्स मेंशन कर दूंगी एज यूजुअल। अब चेक कर लेना। आप ऑलरेडी देख चुके हो कि कलर्स शुरू करने से पहले एक नीडेबल इरेजर से एक्स्ट्रा ग्राफाइट को मैं इरेज कर दिया। इससे एक्स्ट्रा ग्राफाइट का कलर के साथ मिक्स होने का चांस नहीं रहता है और ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब करने का नहीं है इसमें। बस देखते रहो कहाँ पर कैसे मैं कलर को अप्लाई कर रही हूँ। एंड ब्लेंडिंग के लिए मैं कॉटन बर्ड्स एंड स्मॉल पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ का यूज़ करूँगी। सो देखते रहो एंड एंजॉय द प्रोसेस। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और फीडबैक ऑन दिस ड्राइंग प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
बेसिक कलर्स अप्लाई हो चुका है। अब इसके ऊपर धीरे धीरे डिटेल्स एंड डार्कर वैल्यूज ऐड करते जाऊंगी। सो बहुत ध्यान से देखना ये प्रोसेस एंड फॉलो करना कहाँ पर कौन सा मटेरियल मैं यूज कर रही हूँ। बैकग्राउंड को थोड़ा और कलरफुल बनाने के लिए मैं और कलर्स अप्लाई करूंगी एंड इसके लिए मैं ब्रूस्ट्रो का ऑयल पेस्टल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डॉम्स का इक्विवेलेंट शेड्स देख लेना, मैं उधर सारा सब्स्टिट्यूट शेड्स मेंशन कर दूंगी।
बहुत सारा कलरफुल पैचेस एंड डिटेल्स ऐड करने के बाद हो गई है पेंटिंग कंप्लीट। सो कैसा लगा इसका फाइनल लुक कमेंट करके बताना मत भूलना। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।